Hi everyone, good evening. How are you guys today? I hope everyone is doing very good. एक बार जल्दी से टेक चेक कर लेते हैं. If you can hear and see me clearly, send me a hi in the chat box. Tell me if everything is uh, without any glitches. I am clearly audible and visible to everyone watching me live. जल्दी जल्दी से बता दो. Good evening, good evening, good evening. Good evening, everybody. So we've been doing this previous year question papers. हम एक एक करके years उठा रहे हैं और उनमें से बहुत सारे different types of questions कर रहे हैं. जैसे हमने पहले summary based questions करे थे, उसके बाद हमने odd sentence out, उसके बाद हमने para completion किया था. आज हम odd sentence out करेंगे. And odd sentence out में हम 2023 के तीनों slots के सारे questions लेंगे. But उनको start करने से पहले we'll be अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक्स कि ऑड सेंटेंस आउट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद 2023 के तीनों स्लॉट्स के सारे ऑड सेंटेंस आउट के क्वेश्चंस लेंगे. ऑड सेंटेंस आउट वीए में एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट माना जाता है एज अ क्वेश्चन टाइप, बट आई डोंट थिंक इट इज अ डिफिकल्ट वन. ये डिफिकल्ट बनता है जब आप उसका पूरा सीक्वेंस बनाने बैठते हो, ठीक है. सो आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाई ये आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है और ये क्यों एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑड सेंटेंस आउट टाइप. वन सेकेंड. क्वेश्चंस फॉर बॉल पॉइंट पेन 2023. ठीक है, हियर वी गो. ओके, तो होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में. Agenda is we solve all the PYQs from 2023 all slots of odd sentence out. But first half an hour हम सिर्फ theory discuss करेंगे. 15-20 minutes हम इसकी theory discuss करेंगे, ठीक है. Alrighty, yeah. And before I begin, finally my batch starts on the 7th of July. इसकी preview class परसों संडे को हमारे ऐप में for free होगी. I'll be taking that class. और फिर मंडे से हम अपना ऑफिशियल बैच लॉन्च कर रहे हैं. दिस बैच कम्स विद रवि सर एंड लोकेश सर एज वेल. सो इफ यू आर समबडी हु डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी ओनली लेफ्ट विद 5 months, तो ये कैट 2025 का बैच राइट नाउ ज्वाइन करो. वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लासेस, प्रैक्टिस, थ्योरी, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑल ऑफ इट कमिंग टुगेदर. ओके. सेकेंडली हमारा 2026 का अर्ली स्टार्टर बैच भी लॉन्च हो चुका है. You can enroll for that batch as well. My batch is for 2025 aspirants, ठीक है. और 2026 के लिए भी एक बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. जल्दी से enroll करो all those people who are targeting 2026. That, my students, is the QR code for my Telegram channel. You know, I've been taking these editorial classes and there's a lot of discussion happening there. So इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ वो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स जो आपको पढ़ने चाहिए, उनको मैं आरसीज में कन्वर्ट करती हूँ. वी सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द एडिटोरियल. आई शेयर वोकैबुलरी फ्रॉम द एडिटोरियल. आई मेक क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी एज वेल फ्रॉम द एडिटोरियल. वी डू क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड प्रैक्टिस आल्सो फ्रॉम एडिटोरियल. ऑल ऑफ दैट विल बी शेयर्ड इन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड लॉट्स मोर डाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, ऑल ऑफ दैट. इंश्योर दैट यू स्कैन इट. पेमेंट क्यूआर कोड नहीं है. द क्यूआर कोड इज फॉर ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम बैच. स्कैन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्कैन करके ज्वाइन कर लेना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपके पास ऑड सेंटेंस आउट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. ऑड सेंटेंस आउट में यू आर आइडियली गिवन 5 सेंटेंसेस, ठीक है. और 5 सेंटेंसेस में आपको उन सेंटेंसेस में से एक ऐसा सेंटेंस फिगर आउट करना है जो उस पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करता. आई विल रीटरेट. आपके पास 1, 2, 3, 4 and 5 sentences है, ओके. इनमें से 4 sentences एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाएंगे और एक सेंटेंस उस पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करेगा. You have to identify which is the one sentence out of the 5. Usually 4 to 5 sentences आते हैं, but last few years में हमारे पास में 5 ही sentences आने लगे हैं. So you have to identify that one sentence that does not belong to the paragraph. Now there are multiple techniques that we use to solve it. But remember something. How is such a question made? पहले ये समझने की कोशिश करो. उसके बाद
मैं आपको समझाऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. When you put yourself in the examiner's position, you are more capable of getting the question correct. So if I am an examiner, how I create such a question, let's understand that. What I do is I pick up one passage. The passage will have many paragraphs. I pick up one paragraph. Okay, from the paragraph I can pick up any 4 sentences and I will mix them up and make them into 4 options here. One additional sentence that will be an odd one out will very likely belong to the same passage but very likely not the same para. शायद इस para से नहीं होगा but will belong to the same passage. Sometimes if there are very difficult questions they may belong to the same para as well but उस sequence में वो नहीं आएंगे, but that's a rarity. Very likely it's going to be belonging to the same passage. कभी कभी वो किसी और passage से भी हो सकता है अगर वो बहुत ही आसान question है तो then it can belong to a different passage altogether, but the whole idea is it will be sounding similar to you as a topic. So you might think अच्छा ये तो पांचों एक ही की बात कर रहे हैं तो मेरा और sentence निकलेगा कैसे? That's the catch. That's where most of the people fall into traps. So let's try to decode the trap, break it and get out of it and get our para odd sentence out questions correct. Okay? तो सबसे पहला टेक्निक, ये सबको आ गया समझ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? I hope you've seen those questions as well. Okay? अब टेक्निक क्या है, कैसे हम फॉलो करते हैं? ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. We'll focus on this the most. Out of given 4 or 5 sentences, all except one will form a coherent paragraph. First step is to identify the central topic or central theme of the sentences. If 4 sentences are picked up from the same paragraph, there will be a theme that will be visible, a topic that all of these 4 sentences are talking about. Obviously, each one is taking the idea further, but all of them will have a thematic highlight, a point that is common amongst all of the 4 sentences. Okay, so in such a case, when you have a common theme and you are able to identify that, the odd sentence will not follow the common topic. Now, this is very important. Please pay attention here. आपको लग सकता है कि सारे sentences एक ही चीज की बात कर रहे हैं. There is a bigger theme and there is a nuanced theme. I have to focus on nuanced theme. Minor topic क्या होता है? जैसे for example, अगर मैं एक passage लिख रही हूं on cars, ठीक है, that are automatic. Okay, तो सारे पैराग्राफ्स ऑटोमेटिक कार्स की ही बात करेंगे कहीं ना कहीं, बट एक पैराग्राफ है जो बात कर रहा है ऑटोमेटिक कार्स विथ टर्बो इंजन. ओके, so all the 4 sentences here will talk about automatic cars with turbo engine. One odd sentence will also talk about automatic cars but not turbo engine. It might talk about the ease of driving on the roads. Major theme common है, इन चारों sentences में भी automatic car है, इस odd sentence में भी automatic car है, but the odd one does not have a nuanced theme of turbo engines. While you're identifying the central topic or theme, you have to look at the nuanced topic, because as I've said that earlier, an odd sentence will also be picked up very likely from the same passage. तो आपको लगेगा हाँ रिलेटेड तो है, ऑफ कोर्स रिलेटेड होगा क्योंकि सेम पैसेज से है, बट वो नुआंस थीम उनका सेम नहीं होगा. We'll have to focus on that, and this, my students, is the best technique that helps you. There is another technique which is going to be visible in the next slide. Okay, but उसके पहले आप ये nuance theme ढूंढोगे कैसे, पहले ये समझने की कोशिश करो.
Nuance, to be able to identify a nuance theme, you ask yourself this question. What are the sentences talking about? बोल जाओ 4 sentences, okay? What are these sentences talking about? So these sentences are talking about turbo engines in automatic cars. हमने नुआंस थीम पे ध्यान दिया. सिर्फ अगर आप एक ब्रॉडर थीम देखोगे, जैसे हम एक आरसी में देखते हैं या समरी बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं, आप बहुत सारे ट्रबल में फंस सकते हो. तो ध्यान से फोकस करो कि कॉमन क्या है सारे सेंटेंसेस के बीच में. And the moment you find the common subject, you know one sentence will not have that common subject. It may be related, but the nuance theme will not match. And thus, you have found out your odd sentence. How many of you now solve an odd sentence type question by first making a sequence of 4 and then identifying one that does not fit the sequence? ये आंसर करो, फिर मैं आपको समझाती हूं कि क्या ये सही है. I will repeat. How many of you solve odd sentence out questions by making a sequence of 4 sentences कि 3 4 2 1 आएगा तो 5 odd है, 3 4 2 1 इसी sequence में आएगा तो 5 odd है. How many of you follow this technique? I'll tell you why it's not an excellent way of solving parajumbles, odd sentence out, because when you try to form a mini paragraph by, the next one has it. Yeah. By making them logically linked. For example, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा. Thus 5 is my odd sentence out. Making this sequence in itself will take up a lot of time from your end. And as I have said that earlier, I'll keep repeating that CAT is for sure a test of your speed. I cannot afford to spend more time than necessary to each question. When you have theta type parajumbles, you will have to make a sequence. You don't have a choice there. Right? And that's exactly why you do not have a negative marking there. Nonetheless, here you can still solve this odd sentence out without making a sequence, saving yourself 1 full minute. Okay? When you save yourself 1 full minute, you're able to dedicate this minute to those difficult questions when you're stuck. So making a sequence and then finding an odd one out works when you are just unable to get the theme, the minute nuanced topic of the passage. If you're unable to get it, then you can make a sequence. But all the questions that I've brought to you today, all can be answered without making a sequence. Sequence बता दूंगी मैं आपको, but बिना sequence बनाए आप easily solve कर सकते हैं इनको. Trust me on that. तो हम वापस आते हैं इस पे. What do we try to do? एक बार erase करने तो मुझे. Okay, yeah. हम क्या करेंगे? हम एक nuanced theme देखेंगे. Okay, nuanced topic देखेंगे और nuanced topic देखते देखते हम erase all. Now I've got it. बड़ी देर बाद समझ आया मुझे. Ballpoint pen. तो हम सबसे पहले देखेंगे nuanced theme. ठीक है, हम देखेंगे tone और हम देखेंगे scope. And we will violate options as per these. How? Any sentence that does not follow the nuanced theme of the passage will be your odd sentence out. Remember the example of automatic cars and automatic cars with turbo engine. One sentence that spoke of the ease of driving automatic cars in Bengaluru roads did not follow the nuanced theme of turbo engine was my odd sentence. Any sentence that violates the whole tone of the passage. Let's understand that as well. When I write a passage, my tones may vary from paragraph to paragraph. For example, if I'm writing an analytical passage
on how providing subsidy on LPG can impact our economy. ठीक है, तो अगर मैं एनालिसिस करूं तो एक पैराग्राफ में मैं उस सब्सिडी के पॉजिटिव्स बताऊंगी, एक पैराग्राफ में मैं सब्सिडी के नेगेटिव्स बताऊंगी, एक पैराग्राफ में मैं कंक्लूजन लेके आऊंगी। मेरा टोन हर पैराग्राफ के साथ चेंज हो सकता है। ओवरऑल टोन आपका एनालिटिकल हो गया, बट हर पैराग्राफ का भी एक अलग टोन होता है, सब टोन होता है, सब स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। इफ यू find a sentence, 4 sentences that talk of the benefits of LPG subsidy and one talks of a conclusion or one talks of a demerit of it. You know you found a sentence that violates the tone of the overall paragraph from where the remaining 4 sentences have been taken. So that's the second logic you can use to find odd sentence out. Agreed everyone? अच्छा कोई chat में कुछ बोल ही नहीं रहा है, एक बार हाई भेज तो मुझे, फिर तो रिकॉर्डेड ही देख लिया करो, सेशन लाइव क्यों आना? मुझे भी तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ना कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। हाई भेजो एक बार जल्दी से, मुझे थोड़ी बातें किया करो, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा ना। अभी तो मेरे पास सिर्फ कैमरा है, मैं कैमरा से बातें कर रही हूँ, मैं उधर देख के भी बातें करने लग जाऊंगी, इधर देख के भी बातें करने लग जाऊंगी, सुनाई तो देगा आपको, या फिर रिकॉर्डेड देख लिया करो। ऐसे नहीं करते बच्चे, बातें करते हैं, है ना। कीप टॉकिंग सो दैट I know how much you've understood. Say a hi, say a good evening, say a greeting. That's being courteous. And if you've still not hit the like button, do that now. Okay? So back to it. Any sentence that violates the nuance theme, odd sentence. Any sentence that violates the tone, odd sentence. Any sentence that violates the scope also will be an odd sentence. Scope क्या होता है? Scope सबसे आसान होता है ढूंढना, ये सबसे easiest questions की कैटेगरी होती है। पूरा पैसेज बात कर रहा है एलपीजी पे सब्सिडी की, और ये सेंटेंस किसी और ही पैसेज से पिक्ड अप है जो बात कर रहा है हाउ ड्रिंकिंग वाटर इन अ ग्लास टम्बलर कैन बी अनहेल्दी फॉर यू। ये तो पूरे स्कोप से ही बाहर हो गया पैसेज के, है ना। तो ये टोटली एक डिफरेंट पैसेज से उठाया गया। ऑल तो ऐसे क्वेश्चंस ना आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो आएंगे तो मोस्टली इन दोनों में से आएंगे और मैक्सिमम इनमें से आएंगे। तो हम एक कॉमन थीम देखेंगे, नुएंस थीम देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू वायलेट इट। कुछ भी नहीं होता है तो हम सेंटेंस की ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर हम सीक्वेंसिंग बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक 2 4 3 1, दीज आर लॉजिकली लिंक्ड, वे इसी ऑर्डर में आएंगे। ये इससे कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस प्रोनाउन, ये इससे कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ क्रोनोलॉजी, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अल्पा मैम ने पढ़ाया, फिर हमने मॉक दिया, फिर हमारा कैट क्लियर हुआ, फिर हम आई एम गए। सीक्वेंसिंग में होगी ना सारी चीजें, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप पेयर्स बना सकते हैं दो दो सेंटेंसेस की। ओके, तो 2 and 4 साथ में आएंगे, 3 and 1 साथ में आएंगे, तो 5 ऑड हो गया। यू कैन फाइंड आउट एन ऑड सेंटेंस विद दैट लॉजिक एज वेल। ऑलराइट, देन यू हैव सेंटेंसेस दैट ब्रेक द फ्लो। सो ये न्यू टॉपिक इंक्लूड करेंगे दैट वायलेट्स द स्कोप। मैंने आपको बताया था ना कैसे एक सेंटेंस स्कोप को वायलेट कर सकता है। ग्लास टम्बलर में पानी पीना हार्मफुल हो सकता है। ओके, इट चेंजेस द टोन, इट वायलेट्स द टोन, इट डजंट लिंक टू एनी अदर सेंटेंस। यहां ग्रुपिंग नहीं हो रही। क्या लिख रही हूं, यहां ग्रुपिंग नहीं हो रही। इट इज टू स्पेसिफिक और टू जनरल कंपेयर टू द अदर्स, सो दिस इज नॉट फॉलोइंग द नुआंस्ड थीम। एक बार मुझे बताओ कोई डाउट्स है इन चारों पॉइंट्स में जो हमने डिस्कस किए हैं। इफ आई हैव टू डिफाइन व्हाट सेंटेंस इज ऑड, इट विल ईदर वायलेट माय स्कोप, माय थीम, माय टोन, or will not fall into grouping of two sentences, will not fall into any of the mandatory pairs। कोई भी दो sentences को आप साथ में नहीं रख पाएंगे। किसी को डाउट है मुझे बताओ एक बार जल्दी से। डाउट किसी को, एनीबडी? जब हम ग्रुपिंग करते हैं सेंटेंसेस की, जब हम पेयर्स बनाते हैं सेंटेंसेस के, आपको मैंडेटरी पेयर्स बनाने आते हैं? अपने पैराजम्बल्स जब किए होंगे तो अपने मैंडेटरी पेयर्स बनाए होंगे, आते हैं आपको मैंडेटरी पेयर्स बनाना? कैसे बनते हैं?
ए और सी साथ में आएंगे, 2 और 4 साथ में आएंगे। आते हैं आपको मैंडेटरी पेयर्स बनाना? जल्दी जल्दी बताओ एक बार मुझे। ओके, सो अज्यूमिंग आप लोगों को मैंडेटरी पेयर्स बनाने आते हैं, एक बार क्विक रिविजन उसका भी कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। मैंडेटरी पेयर्स किन लॉजिक्स से बनते हैं? नाउन प्रोनाउन सीक्वेंस, दिस साइकिल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कोई साइकिल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जरूर मेंशन होगी इसके पहले। पेयर बनाओ, दिस दैट दीज दोज, ही शी दे वी अस, हु हुम, ये प्रोनाउंस ना एक काउंटर नाउन के साथ जरूर आते हैं। आप नाउन प्रोनाउन सीक्वेंस बना सकते हैं, आप कंजंक्शंस के साथ सीक्वेंस बना सकते हैं। बट है तो दो ऑपोजिट सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे, देयरफॉर है, हेंस है, तो एक कंक्लूजन है, इसके पहले प्रेमिस होगा जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ओके, क्रोनोलॉजी है, दैट इज सीक्वेंसिंग। अगर एक सेंटेंस में फर्स्टली लिखा है, एक में सेकेंडली लिखा है, यू नो फर्स्टली के बाद ही सेकेंडली आएगा, ठीक है। कॉज है तो उसके बाद ही इफेक्ट आएगा। These are some reasons that we can use to make mandatory pairs. Similarly, mandatory pair देखो यहाँ पे however, therefore, this, that, pronouns, later, now, earlier, temporal markers भी आप use कर सकते हो for making mandatory pairs. And the moment you make two mandatory pairs, you know you found your odd sentence. But remember, the best technique that my experience tells me of teaching so many aspirants and solving so many papers is that you find the nuanced theme. एक कॉमन थीम बिना सेंटेंसेस को अरेंज करे ढूंढो, और वो सेंटेंस जहां वो थीम नहीं विजिबल हो रही है आपको, आप वो सेंटेंस को ऑड मार्क करेंगे। ओके, रिमेंबर द ऑड सेंटेंस माइट सीम रिलेटेड क्योंकि उसका मेजर थीम सेम होगा, बट इट विल सटली शिफ्ट फोकस। इसका नुआंस्ड थीम अलग होगा। Trust the core idea, not just vocabulary similarity. The core idea is a nuance theme common between 1, 2, 3, 4 sentences. Overall theme may be the same. Vocabulary may be the same. But theme क्या है उन 4 sentences में common? आप वो ढूंढेंगे। Okay? Understood everybody? Shall we start solving questions now? ठीक है? CAT 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। कॉमन थीम ढूंढो, सीक्वेंस भूल जाओ क्या है, कॉमन नुआंस थीम ढूंढो और फिर एक ऑड सेंटेंस निकालो। गुड लक।
आई एम श्योर आपको सारे सेंटेंसेस सिमिलर लग रहे होंगे कि इनका तो एक ही थीम है, नुआंस थीम। रिमेंबर, छोटा एक थीम होगा जो 4 में होगा बट उस 5th में नहीं होगा, ध्यान दो। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूं। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये ऑड सेंटेंस नहीं है। मैं आपको इसका एक नुआंस थीम निकाल के बताती हूँ। वही नुआंस थीम आपको और 3 सेंटेंसेस में दिखेगा बट एक में नहीं दिखेगा। ट्राई टू फाइंड दैट। In English, there is no systematic rule for naming of numbers. No systematic rule for naming of numbers. ये है इसका nuance theme. Example है 10 के बाद 11 कर दिया, 12 कर दिया, अब फिर 3 आ गया, 11 12, फिर 13 14, तो 11 12 में 3 क्यों नहीं आया? कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं है फॉर नेमिंग ऑफ नंबर्स। इन रिमेनिंग सेंटेंसेस में से 3 सेंटेंसेस में यही अंडरलाइन पार्ट फॉलोड है एज नुआंस थीम। फाइंड आउट द 5th वन जिसमें वो नहीं है। 3 is the odd one. Sridhar and Amna. Chalo, let's check it. Even more confusingly, some English words invert the numbers they refer to. Word as 14 puts 4 first. ये भी कोई रूल नहीं है, सिस्टमैटिक रूल नहीं है नेमिंग नंबर्स का, ठीक है? तो वर्ड्स को इन्वर्ट कर दिया। दैट इज ये भी फॉलो कर रहा है सेम थीम ऑफ नो सिस्टमैटिक रूल फॉर नेमिंग ऑफ नंबर्स। फॉर मल्टीपल्स ऑफ 10 इंग्लिश स्पीकर स्विच टू अ डिफरेंट पैटर्न। अब मल्टीपल्स ऑफ 10 के लिए अलग पैटर्न है एंड देन 10 to 20 के लिए अलग पैटर्न है, उनमें 3 आ जाता है। तो ये भी बात कर रहे हैं कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं है नंबर के नेम्स का। 20 30 40 एंड सो ऑन। ये तो 10 के मल्टीपल्स में हो गया बट रिमेनिंग नंबर्स पे वो फॉलो नहीं होता। इफ यू डिड नॉट नो द वर्ड 11 यू वुड बी अनेबल टू जस्ट गेस इट। आप 1 बोल दोगे, जैसे आप 13 बोलते हो, 14 बोलते हो, वैसे आप 1 बोलोगे, तो फिर उसको 11 क्यों बोलते हैं? कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं है नेमिंग नंबर्स का। You see this common theme in all of the remaining sentences apart from 3. And you're absolutely correct, Amna and Sridhar. The odd sentence is 3. It can take children a while to learn all these words and understand that 14 is different from 40. 14 is different from 40 not because of the rule of naming of number. It is how a child learns to number and count. So this sentence, अब major theme क्या हो गया? Numbers. But हमको nuance theme पे जाना था और nuance theme था no systematic rule which third does not follow. तो sequence आपका था 1 2 4 5. I'll write this down here. 1 2 4 5 और 3 आपका odd sentence था, but sequence बनाने की जरूरत नहीं थी। सीक्वेंस बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट व्हाई मेकिंग अ सीक्वेंस इज एक्चुअली नॉट नीडेड टू बी एबल टू सॉल्व एन ऑड सेंटेंस टाइप क्वेश्चन। इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या देना है, क्या कर रहे हो इसके लिए ये भी बताओ, फिर मैं बताऊंगी उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। आप मेरे एडिटोरियल क्लासेस में आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना? आ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। बट अगर नहीं आ रहे हो ना तो जरूर आना और मेरा ना ये टेलीग्राम बैच ज्वाइन करो। मैं वहां अपने आर्टिकल शेयर करूंगी और बहुत सारी आपको हेल्प कर दूंगी ऑफ हाउ टू ये रहा
स्कैन कर लो इसको. एवरीवन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. आपको मैं हेल्प करूंगी ऑन हाउ टू एक्चुअली इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्लास के एंड में फिर एक बार दिखा दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक. स्कैनर है वो. ओके, इंग्लिश बहुत कमजोर है मैं समझ गई, बट आप करते क्या हो इसके लिए, ये पूछ रही हूँ मैं. कुछ नहीं. और एडिटोरियल क्लासेस में आते हो क्या, ये दोनों क्वेश्चन आंसर करो, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगी. तब तक एवरीवन एल्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्लॉट 1 अगेन, CAT 23. Good luck. Follow the technique of nuanced theme. Okay, Sridhar. Others, all right, Arpita. Let me help you find out a few things in the paragraph that will help you find the odd sentence. One is not the odd sentence. Let's figure out the nuance theme. Having an appreciation for the workings of other person's mind is considered a prerequisite for natural language acquisition, strategic social connect, interaction, reflexive thought, and moral judgment. Thinking about other people's mind, what they are thinking, what they are going through. Ankit also says too. ठीक है, एक बार check करते हैं. It is a theory of mind, though some scholars prefer to call it mentalizing or mind reading, which is important for the development of one's cognitive ability. Am I analyzing another person's mind? Maybe not in the sentence. One aega. One of the most fascinating human capacities is the ability to perceive and interpret another person's behavior in their mental state. Nuance theme same.
This capacity is the capacity humans have. So 4. This capacity develops from early beginning in the first years of life to the adult's fast and often effortless understanding of others' thought. दूसरों का mind. ठीक है? 3. Though we must speculate about its evolutionary origin, we do not have indications of the capacity evolved. The capacity, the same capacity mentioned here. So 1543 is a sequence, but we don't have to make the sequence. This sentence and these two do not talk of thinking of other people's mind. इन दोनों में से आप सीक्वेंस में डाल के देख सकते हो. And because the capacity, this capacity दोनों लिंक कर रहे हैं, you know, 2 for sure is going to be your correct answer. And thus, Sridhar, Arpita and Ankit have got that correct. Very good. Before I proceed, if you've not hit the like button, ensure that you do that. And if you're watching it recorded, ensure that you comment under my video if you have any questions, if you have any requests that you would want me to come up with as sessions, please comment under my video. So, voila, second is a correct answer. चलते हैं अब. Before I show you slot 2 and uske questions, we have a diagnostic CAT test for CAT 2025 aspirants. July 6th, that is day after tomorrow. If you've not enrolled yourself yet, please do that. 2 slots, 12:30 and 5 p.m. mein hoga. Enroll yourself right now and make the most of this test because thousands of other students are going to sit for it and compete with you. See where do you stand. Slot 2, CAT 2023. Solve the question. Good luck. Rajneesh, all right. Others who are still solving, you might want to make a sequence here because you see self-care is visible in most of these sentences. Okay, and latchkey children as well. Latchkey children associated with self-care. So you might want to make a sequence. Three, Sridhar, all right. Four, okay.
Our opening sentence here is two, that introduces us to the term latchkey children. Who are latchkey children? Who come back home from school to an empty house and stay inside for long hours. They have to take care of themselves. Okay, this sentence also talks of latchkey, but tells us that latchkey को replace करके children in self care use कर दिया हमने. So these two sentences talk of latchkey. 2 and 4 can be made into a pair. Okay. We have replaced the word latchkey with children in self care in an effort to more accurately reflect the nature of their circumstance. What is the nature of their circumstance? That they are staying in the house, taking care of themselves for extended periods of time. Although parents might believe that self-care would be beneficial for development, research tells us opposite. This sentence, development is positive, but the opposite will happen. What is the opposite? It is linked to loneliness, behavioral problems, negative academic outcomes. So 5 and 1 also is a pair. Word although tells me इसके बाद अगर positive है, but basically two sentences connected with positive and negative meaning. So this has negative, 5 and 1 is our pair. I am left with 3 that also talks of self-care. Although self-care generally points to negative outcomes, it is important to consider that the bulk of research has yet to track long-term consequences. One, I do not know if a bulk of research has been happening across the passage. Neither does this sentence tell me. Okay, research हो रहा है वो भी मुझे किसी और sentence में नहीं मिल रहा है. So you might think that 3 may be a part of the whole paragraph, may be picked up from the same para also. But हो सकता है इस 3 के पहले ना यहाँ बीच में एक sentence और आए. So 3 will not belong to this sequence that we've made. Okay, thus 3 is absolutely the correct answer. And yeah, it is 3. Understood everybody? Why it did not fit the sequence? You might want to actually put 1 and 3 together. ये किस किस के मन में आता है कि 1 and 3 साथ आ जाएगा? Arpita, did you understand why 5 and 1 is going to be a pair? Did you get it, or do you want me to explain that again to you? I read your, because initially everyone said 3, so I thought you've understood it. Okay, Ankit, did you get it? Diya, आया समझ में? 2 and 4 साथ आएंगे, 5 and 1 साथ में आएंगे. You might think 1 and 3 साथ में आने चाहिए, but actually 1 and 3 के बीच में ना कुछ और सेंटेंस आना चाहिए जो बताएगा बहुत सारी रिसर्च हुई है, बट वो रिसर्च ये प्रूव नहीं कर पा रही कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. सो बहुत सारी रिसर्च हुई should come in between 1 and 3. Okay, all right, let's come to slot 2, CAT 2023. Solve your question. Good luck. All right. Can I say 4 and 1 will come together here? Diya.
Yeah, 4 and 1 will come together. That's right, Dia, you've told me that. 2 and 3 will come together. Okay. 2 banning books and banning books. But ये भी तो banning ही है. ये नंबर ऑफ जो बुक्स है ना 2500 यूनिक टाइटल्स को बैन कर दिया गया. ये भी तो उन बुक्स के बैनिंग का ही नंबर है. दिया, चलो आपको एक और काउंटर थॉट देती हूं मैं. Now the banning and challenging of books in the US has escalated to an unprecedented level. What does unprecedented level means? अब ये banning और challenging इतनी huge number पे पहुंच गई है. Challenging. Is this 2500 the proof of the unprecedented level of challenging? So 3 and 5 should be a pair with that logic. Amna, do you agree? Diya, do you agree? 3 and 5 should be a pair with that logic. 3 tells me that the challenging of books has went to an unprecedented level. Look at this. In 22, we challenged 2500 unique titles. तो देखो सीक्वेंस. एक बात मेरी याद रखना, आप लोगों ने ना एक गलती करी. Don't be offended with what I say. Okay? When we are practicing, initially when we try to master accuracy over speed. What we should do ideally is we should be carefully reading each sentence while we are learning the concept. Again, that's why I'm telling you this, Diya, and everyone else. You might miss out on that nuanced topic that I've been referring to again and again. And that may fetch you an incorrect score. You might be thinking multiple things here. That now the banning should not be the first sentence. This looks like an odd one to me. Okay, this might be the first sentence. There are multiple levels where we could go wrong. The one way of practicing that will fetch you correct score gradually with speed is to focus on each sentence, each word. All the 5 sentences here have been picked up from the same para, but not in a coherent sequence. Okay? So, what I want to tell you here is that actually 2 is the odd one. Okay? 3 is your beginning sentence. But आप कैसे उसको fetch करोगे? एक nuanced detail पे ध्यान देना पड़ेगा आपको. Everyone else. धीरे धीरे पढ़ो, तमीज से पढ़ो, एक एक वर्ड पे फोकस करो. नहीं बनता तो सीक्वेंस बनाओ. फिर भी देखो क्या इस सीक्वेंस में वो फिट हो सकता है मेरा सेंटेंस जो मैंने और सोचा है. ओके, सो जस्ट अ मिनट. 4-1 एंड देन वी हैव 3-5 एज अनदर पेयर. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. नाउ द बैनिंग एंड चैलेंजिंग ऑफ बुक्स इन द यूएस हैज एस्केलेटेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल. ओके, और ये चैलेंजिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एग्जाम्पल है. 3-5. 4-1 लिंक कर दिया, ये तो आपने पकड़ ही लिया था. Attempts to ban book also is a common theme, but it is bringing a new idea that is, the way how authors are showing their courage, but by banning they're not able to showcase it. Other 4 sentences are showing that how books are being banned, but what an author wants from writing a book and what is being suppressed if his book is not released is a new nuance theme that is being brought in. Thus, our odd sentence will be 2. Okay? Sridhar says 3, 4, 5 talk about banning and challenging books. Absolutely. That's exactly what I was saying. Correct. Though bigger theme is challenging and banning books in 2 also, but it has more data of what an author thinks while he's writing a book, what will he go through, all of that does not belong to by nuance theme of the other 4 sentences. आया समझ में सबको? ठीक है, तो धीरे धीरे करेंगे, रश नहीं करेंगे,
समझेंगे कंसेप्ट और फिर ग्रेजुअली स्पीड विल फॉलो. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. स्लॉट 3 to this question. Patience. ध्यान से पढ़ना एक एक. ओके, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सीखेंगे उससे और, है ना. One second, guys. I'm in a bad fix. Diya, okay. Others? Diya, what is the one making a sequence here is easy. Can you tell me the nuance theme in the remaining 4 sentences? If according to you 2 is the odd one, what is the nuance theme in the remaining 4 sentences? Okay, Sridhar, can you tell me the nuance theme in the remaining 4? Soft skill. Yeah, correct. Rajneesh 1. चलो एक बार sequence बनाते हैं. Correct. Absolutely. No, answer है 2. 1 नहीं है. Correct answer 2 ही है. चलो एक बार समझते हैं कैसे. 1 introductory sentence है paragraph का. Hard skills and soft skills का comparison है. Although hard skills have traditionally ruled the roost, some companies are moving away and not hiring basis only on technical abilities. So they're moving away from hard skills. Hard skills का example है technical abilities. One sentence that is explaining how are they moving from away from technical abilities alone. Some job descriptions are asking for soft skills. So although है ये hard skill की बात करता है, उसका opposite हो गया soft skill. Although we will connect two opposite sentences. So 1 and 3 connected. Okay. To move towards prioritizing soft skill. Here also soft skill. Here also soft skill. Okay. So 3 and 5 is a pair. The move towards prioritizing soft skill is a natural response to 3 years of the pandemic. But that's not to say that practical know-how is no longer required. Practical know-how is hard skill. So 4. Whereas 2 talks of ideal candidate, singularly perfect candidate. No hard skill soft skill comparison. Ideal candidate कौन होता है? हो सकता है जिसमें hard skill soft skill दोनों हो. But this sentence has to tell me that हो सकता है that I had assumed to be able to be a part of the sequence. Did you now understand why 2 is the odd one? Okay. All other sentences talk about hard soft skill, whereas 2 talks about the ideal candidate. Correct, Sridhar. रजनीश आया समझ में? क्यों 1 आपका odd नहीं है? 1 actually introduce कर रहा है आपको hard skill से. फिर 2 sentences soft की बात कर रहे हैं. फिर hard की बात करता है 4th वाला. Okay. So I hope everyone has understood this. 2 is your odd sentence. Last question from CAT 23's slot 3. Do this. Good luck. Very easy this is.
Okay. Two. Amna, Dia, nuance theme in the remaining four. What do you think it is? It's easy. You can easily figure it out. Exactly. Bow is the common theme in the remaining four sentences. Two talks about the population residing in a colony. रजनीश बच्चे ये इजी था, देखो मैं सिखाती हूँ कैसे होगा ये. फोर भी बो की बात कर रहा है. लास्ट स्पीकर ऑफ एन एंशिएंट ट्राइबल लैंग्वेज. ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बो है जिसको वन में इंट्रोड्यूस किया. वन में बताया कि बोआ सीनियर जो कि पूरा सुनामी से भी बच के आ गए. फाइनली ही डाइड एंड ही वाज द लास्ट नेटिव of the island chain who was fluent in Bo. Bo was the language. यहाँ introduce कर दिया, ठीक है. Taking its name from now extinct tribe, Bo is one of the 10 great Andamanese languages. तो ये भी Bo language की बात कर रहा है और बता रहा है कि ये Bo नाम कैसे पड़ा उसी tribe से. The last speaker of an ancient tribal language, ये भी Bo language की बात कर रहा है. He died in the Andaman Islands, bringing 65,000 year link to one of the world's oldest cultures. दो the language, ये भी Bo की बात कर रहा है. तो 4 and 5 ये भी लैंग्वेज की बात कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बात कर रहा है पॉपुलेशन की, उस आइलैंड में जो गिर रहे. हो सकता है पूरा पैसेज का एक कॉमन थीम होगा ये आइलैंड. एक पैराग्राफ आइलैंड के ऑक्यूपेंट्स की बात करेगा, एक पैराग्राफ आइलैंड के लैंग्वेज की बात करेगा. यहां 4 सेंटेंसेस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. Second is talking of population, which will be a part of another paragraph of these Andamanese island only, but is not talking of the language Bo. आए समझ है ना? So it's going to be 2 and 1 3 4 5 हमारा सीक्वेंस है, बट वो ना भी बनाओगे तो आंसर निकलेगा. तो एक क्विक रिकैप बिफोर आई प्रोसीड. नुआंस थीम पे ध्यान दो. ऑड सेंटेंस को सॉल्व करने का सबसे इजी और सबसे क्विक तरीका है फोकसिंग ऑन नुआंस थीम. थीम कॉमन दिख सकता है, अंडमान आइलैंड्स है कॉमन थीम, बट उसका भी एक नुआंस थीम है, लैंग्वेज जो वहां बोली जाती थी. Nuance theme will bring 4 sentences together, one sentence odd. This is the QR code to my, I'll remove the, this is the QR code to my Telegram channel. Scan it, join my channel. We'll have lots of learning happening there. All right. And these are our results. Tomorrow I have another YT YouTube session for you, and my batch starts on the 7th. The preview class for the batch happens on the Sunday. That's a free preview class as a special class on our app. Ensure that you attend it. And that brings us towards the closure. If you've still not hit the like button, do that. If you've still not shared the video with your friends, do that right now. Tell them Alpa ma'am does a tremendous job in teaching the students. Thank you so much, everybody. Have a very, very good day. Good night, rather. God bless you. Bye-bye.